Welcome to the On Call podcast. Get into the habit of making your own notes. Get into the habits of making your own. You might be thinking कि मैं time waste कर रहा हूँ. You're not wasting time. तुम उनको notes को ज़्यादा अच्छे से revise कर पाओगे versus those pre-made notes उनको revise नहीं कर पाओगे. 100%. ठीक है. Pre-made notes से पढ़ना is equivalent to you trying to read from a book. And you know you cannot revise a book. Then why do you think you can revise a pre-made notes? Valid. Yeah, this I feel needed to be spoken about. Yeah, you made notes. I did not make notes. But I regretted it. But you regretted it? Yeah, 100%. Like towards the end, I was like, मैं क्या पागल जैसे I did not write the notes because I always felt कि time नहीं है. But then later when I realized when the exams कर सकते थे, लिख सकते थे, इतना time था, मेहनत. वही. People are lazy यार. I understand. I'm so sorry if anybody's I understand. See, I understand the psychology. People think कि हमारा time waste होगा. ठीक है, वो नहीं है. That is the actual effort that you're putting in. No, I think so. And वो बाद में will bear fruits. As somebody who has just cleared his postgrad entrance, I would say that this is a tough year. Like this preparation year is a tough year when you're like I had to drop a year and then and I was working my job with it. So I realized there is that pressure on you, and it would make you feel like you won't have time or you won't be able to give maximum effort, which is why you don't want to make notes. But then trust me, you have time. You have time. Make notes. Make notes. Even if you have 3 months left, you have time. I think 3 months is more than enough. So I'll tell you, like, you know, the first time I gave my AIIMS exam, I remember that मैंने उससे पहले depressed था, did not study for 2 or 3 months. But जिस दिन मैंने एग्जाम दिया, I realized मैंने सबसे बड़ी गलती ये की है कि मैंने नोट्स नहीं बनाए. This was your postgrad? Postgrad की बात कर रहा हूँ. November attempt जो मेरा था, मैंने नोट्स नहीं बनाए थे. And although I said I got 1700 rank in AIIMS. तो I remember कि although उस समय the major reason was कि मैंने 2 महीने तो पढ़ा ही नहीं था. But I realized कि मैंने पढ़ा भी होता तो भी मेरी इतनी रैंक आती है because मैंने नोट्स नहीं बनाए थे. ठीक है. And after that when I started studying again in January, जो 4 महीने मैंने बैठ के पढ़ाई की, January to April end and May 5th को एग्जाम था, I put 3 months into just making notes. Just making notes. Getting things from what you've already made concising and उसके बाद मैंने खुद के बस अपने notes बनाए, अपने first aid को भर के annotate किया. ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉफ के लिए फर्स्ट एड को, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए खुद के नोट्स बनाए. थोड़े बहुत पढ़े हुए थे मेरे पास, लाइक उत्सव बंस क्लास, उसके मेरे पास नोट्स थे. तमीम के मेरे पास नोट्स थे. 2-3 के मेरे पास नोट्स थे. एंड क्लासेस बना के मेरे पास बने हुए थे नोट्स. बाकी मैंने खुद बनाए. एनाटमी जैसे इन सब्जेक्ट्स के मैंने खुद बनाए. अश्विनी सर के थोड़े TND के थोड़े कम थे, थोड़ा बना रहे. लाइक व्हाटएवर. मेड नोट्स फॉर 2.5 months. Revise them in 1 month. Revise them again in 1 month. फिर एक बार आखिरी वो 7-10 दिन की रिविजन में टॉक अबाउट डेड इट उल्टी करके आया. एंड दैट्स अबाउट इट. खत्म. ठीक है, वो दैट एफर्ट इज वर्थ इट. तुम सोच रहे हो कि तुम 12 घंटे में मे बी प्री-मेड नोट्स को 3 बार पढ़ लोगे, वो याद ही नहीं रहेंगे वर्सेस तुमने एक बार ढंग से खुद लिखा होगा. 3 बार नहीं पढ़ पाओ. It's not possible, boss. That's what people think ना कि मैंने इतने टाइम में, जितने टाइम में मैं नोट्स बनाऊंगा उतने में तो इस चीज को मैं 3 बार पढ़ पाऊंगा. तुम नहीं पढ़ पाते पहली चीज तो. this theory I'll tell you that work expands to fill the time available. I don't know whether you heard about this or not. That work expands to fill the time available. तो तुम्हें लग रहा है कि तुम 3 बार पढ़ पाओगे, तुम वो एक ही बार ही पढ़ पाओगे because your work of reading the notes will expand to fill the time available. तो better है कि notes ही बना लो उससे तो अच्छा. I will literally tell you उन pre-made notes को तुम बस mindlessly भी copy कर लोगे, that will be good. Yeah, this I agree with. I didn't know that you dropped that year. I thought you got it एक बार. drop नहीं किया था, 6 महीने लगा ना, वो पता नहीं चलता लोगों को. So हमारा मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट की जान में. ठीक है. Jan to Jan. तो नवंबर वाला एग्जाम नहीं निकला और मैंने एग्जाम दे दिया मैंने. नवंबर वाला before your internship ended. Exactly. Okay. इंटर्नशिप तो मेरी दिसंबर एंड में खत्म हुई है, तो नवंबर का अटेम्प्ट हो गया. और उसके बाद जस्ट इंटर्नशिप के बाद मई में एग्जाम हुआ, तो लोगों को पता नहीं चलता. टेक्निकली आई आल्सो टुक अ ड्रॉप. है ना, टेक्निकली आई टुक अ ड्रॉप. ठीक है. नहीं, my point is that a lot of people tend to think कि सब कुछ पहली बार में निकाला है तो he's a genius and he has not ever faced like hardship or anything or those lines. तो नहीं यार, पता है मुझे भी. ठीक है, maybe not like I agree कि even 1700 is not that bad a rank. But AIIMS तो में कुछ नहीं मिलता ना मुझे तो, है ना. तो वो चीज़ थी. So and उस एग्जाम को देने से I realize now for a fact कि PG में क्या मिस्टेक्स की थी मैंने.
And that is the reason I'm able to actually make these videos, because I don't want anyone else to make those mistakes. And I realized, like, my father always used to say this, that an intelligent person learns from his own mistakes. A genius person learns from other people's mistakes. Okay, so I was an intelligent person because I learned from my mistakes, but I want people who are geniuses around there, but just probably need some guidance to learn from the mistakes I did and don't make those mistakes and get through. Valid. You said you were going through a tough time during that time. Blood depression to यार, like, I don't even know कि अब वो शुरू कैसे हुआ. Like, the trigger was a breakup, I won't deny that. ठीक है. Most cliche thing ever. It's most cliche thing ever. You might think that but it's serious. कहने के लिए मेरे को एक ब्रेकअप हुआ ना, तो मेरे को ऐसे लगा कि अरे अब तो मैं पहली बार मैं एम्स का एग्जाम पे निकालूंगा. देखो यूजी में मेरा कटा था तो एम्स निकला था, पीजी में कटा था, अब भी एम्स निकलेगा. ठीक है. But somehow it was using not your sorrow for angst. Like, वो क्या कहते हैं, टूटे हुए दिल से म्यूजिक निकलता है. रॉकस्टार में था ना, टूटे हुए दिल से पढ़ाई होती है, बट ऐसा नहीं था. इस बार टूटे हुए दिल से कोई पढ़ाई नहीं हुई. एंड दैट वाज अ ट्रिगर, बट आई थिंक द बिगर रीजन वाज दैट क्या कहते हैं, आई हैड बंडल्ड अप वो 1-1.5 साल से ना. आई वाज लाइक कंटिन्यूअसली, मैं बर्नड आउट हो गया था मोर और लेस. I wanted to ask you about that. Obviously it was a, like, managing internship है ना, with studies and everything, and finally वो फिर obviously वो एक स्ट्रेच होते एक बार टूट गया. टूटने के लिए एक ट्रिगर चाहिए था, वो ब्रेकअप था. और टूट तो बहुत पहले से ही रहा था. आई रिमेंबर दैट, forget the breakup, even before that I hadn't gone to, अब से मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है. ओके, हो ही नहीं रही है, बिल्कुल ही नहीं हो रही है. आई एम स्टडीइंग विद माय ब्रोकन फ्रंट, हमें से हो ही नहीं रहा है. Because you feel restless all the time. हाँ, आई एम जस्ट फीलिंग रेस्टलेस. मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करना है. एंड देन देयर इज अ ह्यूज प्रेशर कि पहली बार में निकालना है. अगेन आई डोंट नो व्हाई इट हैज बीन क्रिएटेड. ठीक है, अगर एमबीबीएस है 12 साल की, लगने ही है 11.5-12 साल, तो अगर कोई चीज़ ऑलरेडी इतनी लंबी है तो 1-1.5 साल और लग भी गया तो क्या फर्क पड़ता है यार. इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेहनत ना करो पहली बार में. देयर आर सम पीपल हु टेक दिस इन अ वे कि आराम से ही सब कुछ करेंगे. ट्राई टू फिनिश जल्दी, बिकॉज एमबीबीएस बेमतलब में बहुत लंबा है. हमारी ट्रेनिंग एक्चुअली में बहुत लंबी है. आई डोंट वांट एवरीवन टू सेटल इन देयर 40s, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि पहली बार में नहीं निकला तो यू आर अ फेलियर और समथिंग ऑन दोस लाइंस. लाइक देयर इज अ बैलेंस बिटवीन बोथ दिस थिंग्स. गिव योर एफर्ट्स. नहीं हुआ, फेयर पॉइंट. गिव योर एफर्ट्स इन अ वे कि मतलब जितने तुम दे सकते हो. डोंट स्ट्रेच यू टू द पॉइंट कि तुम डिप्रेस हो जाओ, वार्ड में एडमिट होने पड़ जाओ. ठीक है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि एकदम ही रिलैक्स हो जाओ, पढ़ो ही मत. बिल्कुल. That is actually a very small percent of the populace, because I feel most of the people are the ones who are like, एमबीबीएस 5.5 साल, जल्दी पीजी करना 3 साल, उसके बाद लेट में हम लोग को सेटल करना पड़ेगा, इससे सब कुछ जल्दी. आई फील द रैट रेस मेंटालिटी इज वो तो हर समय है. लाइक आई नो फॉर फैक्ट, ऑल्दो मेरा डीएम पहली बार में निकला है, बट द रीजन मेरा डीएम पहली बार में निकला है बिकॉज़ आई डिडंट गिव अ फक अबाउट द एग्जाम. ठीक है, वैलिड. ठीक है, बिकॉज़ आई वाज लाइक नहीं निकला कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, एंड द रीजन डीएम पहली बार में निकला है बिकॉज़ अब तक मैंने परफेक्ट कर लिया था एग्जाम को कैसे निकालना है. यू शुड हैव अ सेट ऑफ नोट्स, उनको रिवाइज करना है, उल्टी करके आना है, एवरीथिंग. माय एंगेजमेंट वाज ऑन April 14th. 15 को आई वाज विद दिव्या. एग्जाम वाज ऑन 17th. सिर्फ 16 को मैंने अपने नोट्स जो बनाए थे उनको रिवाइज किया, अगले दिन उल्टी करके आया एंड आई गॉट थ्रू. ऑल्दो मेरे को पता है 14th को मेरी एंगेजमेंट थी, उससे पहले मैंने एंटायर 3 months consolidated effort into making those notes so that on 16th of April, even if I'm technically just done with my engagement, on 16th of April I can study those notes in one day and मैं उल्टी करके आ पाऊँ. तो वो कंसेप्ट मेरे को समझ आ गया था अपना यूजी एंड पीजी देख के. And that's why DM became easy, and also because I did not give a fuck. I was like, इस बार नहीं होगा तो अगली बार निकाल लूंगा, अगली बार नहीं होगा तो ऐसा शिप के साथ कभी भी 1-1.5 साल बाद निकाल लूंगा. Do it at your own pace, but don't stop working hard. Keep on working hard. Consistency is the key. Absolutely, consistency is the key. End में तो सब कुछ consistency पे dependent होता है यार. When did you learn finances? Not? When did you learn finances? Finance? Yeah. Was there ever a time where you had to sit down and be like, अच्छा ये थोड़ा सीखना पड़ेगा, ये स्टॉक मार्केट ये मुझे मतलब like, so my father always was into finances and this all a lot. He was, yeah. So मतलब मैं तो कहूँगा विरासत में मिला है मुझे. हाँ, so मतलब although पापा ने नहीं पढ़ाया मेरे को, but वो क्या कहते हैं inquisitiveness about finance was always there. It was in the family. It was in the family. ठीक है, मम्मा इतनी नहीं है, पापा था तो मैंने खुद ही पढ़ लिया. felt like ये चीज पता तो होनी चाहिए, तो पढ़ता गया. कब when was this time? I'll say every time. मतलब एमबीबीएस ही हूँ थोड़ा बहुत तो. हाँ, मतलब 4th फाइनल. You started very early. मतलब फाइनल ईयर में आई वाज लाइक कि ठीक है, मतलब अब मेरी सैलरी आने वाली है तो इसमें को टैक्स देना पड़ेगा, तो देना भी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा. तो आई रेड अप कि नहीं, स्टाइपेंड इज नॉट टैक्सेबल. ठीक है. You studied all this when मैं 4th ईयर में था, तो मेरे को लगा कि अगले साल इंटर्नशिप है तो मेरे को मिलेगा, है ना. That is that. You realize you're part of the 0.1 percentile of the entire population who's done that.
But I'm doing it not because I wanted to do it. I'm doing it because it is inquisitive. Because of the inquisitiveness. Yeah. मेरे को पैसे नहीं कमाने I के did it this year. I was like, acha. So I was earning like 1 lakh ish this last year. I did my job till November, and then December I was like, नहीं पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, बहुत stretch हो रहा हूँ. I need to leave my job, and so I can study, focus on just the study part of it. So when I was earning that 1 lakh plus वाला thing, समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है इसका इतने का. हाँ, I was like, अच्छा ठीक है, तो फिर सेविंग अकाउंट में थोड़ी ना रखेंगे. एफडी तो नहीं बनाना है. एफडी तो मैं सुना हूँ कि बहुत खराब है. तो करना क्या है? उसके बाद बैठ के आई हैड टू लर्न फाइनेंशियल. मैंने बहुत like I'll be very blunt. I'm not into stock picking and everything. My is simply keep it somewhere where you get good returns and you don't have to think about it. मेरा सिंपल फंडा has been always been कि इतनी मेरी रोज की सेविंग्स होनी चाहिए. ठीक है, इस सेविंग्स को मैं 2 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ. एक एफडी है, ठीक है, क्यों करता ही हूँ ऑब्वियसली, ठीक है, एंड अदर इज इंडेक्स फंड्स. दैट्स अबाउट इट. Oh, you do it in index funds? सिर्फ इंडेक्स फंड्स. Okay. आई एम लाइक कि मेरे को रिस्क लेना ही नहीं है, मैं इंडेक्स फंड्स में ही जाऊंगा, प्लेन एंड सिंपल. ठीक है, वैलिड. ठीक है. एंड जब लाइक यू नो दिस थिंग आई लर्न फ्रॉम तन्मय मोटी वाला. मैंने उनके साथ एक वीडियो भी बनाई थी एक्चुअली में. ही इज वेरी लाइक यू नो माइट नो अबाउट इट. I do. सो ही सेड कि जब भी मार्केट रेड में होती है, अचानक से कुछ लगता है, तब थोड़ा सा एक ETFs खरीदो, निफ्टी ETFs खरीदो, एंड दैट्स व्हाट आई डू. तो कि एक मेरी एक SIP इंडेक्स फंड में तो चल रही है फॉर लाइक 1.5-2 years नाउ. एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब भी होता है ना कि अचानक से मार्केट डाउन हो गई, कि आज बहुत मार्केट गिर गई, बस उस दिन मैं इंडेक्स फंड्स नहीं, मतलब निफ्टी ETFs, SBI निफ्टी ETF खरीद लेता हूँ. अच्छा, वो तो वापस आनी है थोड़ी बहुत. तो बस वो एक थोड़ा सा लाइक यू नो जो कहते हैं टाइमिंग द मार्केट, मैं वो टाइमिंग द मार्केट तो नहीं कर रहा, बस जब गिर रही है तब खरीद ले रहा हूं. बट देन यू चेक रेगुलरली कि हफ्ते में एक बार तो देख ही लेता हूं यार. अच्छा, हाँ, बस कि कभी मतलब लाइक यू नो हफ्ते में एक बार नहीं, मतलब रोज एक बार देख लेता हूं आज मार्केट गिरी तो नहीं. हाँ, ठीक है. अगर आज बहुत गिर गई है तो मैं अगले दिन निफ्टी ETF खरीद लूंगा बस. अच्छा. या आज बहुत गिर रही है, मतलब शाम को खरीद रही है, 8-2-3 बजे गिर रही है, तो मैं उस समय निफ्टी ETF खरीद लूंगा. लाइक सिर्फ लाइक बहुत नहीं यार, 500,000 रुपए लगा दो यार बस. बट वो ओवर ए पीरियड लाइक महीने में 3-4 हज़ार रुपए लग गए. ठीक है, पूरे पीरियड ऑफ 40,000 बन गए. बट वो एक साल में तुम्हें रिटर्न्स इतनी दे देंगे कि वो भी काफी हो जाता है. मच मोर देन योर FD एटलीस्ट, है ना. तुम स्टॉक पिकिंग रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम, एंड रियलाइज आई डोंट हैव दैट मच. ठीक है. एंड दिस इज व्हाई पीपल गो फॉर म्यूचुअल फंड्स. एग्जैक्टली, द एंटायर कांसेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स इज तुमने हेडेक किसी और को दे रहे हो, है ना. स्टॉक पिकिंग का हेडेक तुमने किसी और को दे दिया है. मेरे को ये मैंने कहा कि ब्लू चिप फंड एंड ऑल दिस कुछ नहीं, चुपचाप एक इंडेक्स फंड में कर रहा हूँ, उसमें एक SIP चलती रहेगी, मोर और लेस ऑलवेज हैज बीन इन प्रॉफिट. ऐसे करके हल्का सा टाइमिंग द मार्केट कर लिया, एक्चुअली में इतना ही कर लो बहुत कर लेगा, बिकॉज रिस्क एकदम नलिफाई हो जाता है इंडेक्स में इन्वेस्ट करके. हां, आई अंडरस्टूड बात कर ली. योर एपेटाइट फॉर रिस्क इज नॉट दैट मच. ठीक है. तो हर बार एक करता रहता हूँ, प्लस एक छोटा सा परसेंटेज तनिष्क गोल्ड हार्वेस्ट में लगाया हुआ है कि गोल्ड आता रहेगा. तो तीनों इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है मेरे पास. FD भी हो रही है, इंडेक्स फंड्स भी हो रहे हैं, थोड़ा टाइमिंग द मार्केट भी हो रही है, बट वो इंडेक्स से ही हो रही है. And you have investing in gold. And थोड़ा सा गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर रहा है, बस सब कुछ हो रहा है. हाँ, ठीक ही है. What do you do? Like, do you have like 2 bank accounts and you salary मिलते हैं, you send something to the other bank account? What is it? अच्छा, वो कैसे करता हूँ? Like saving कैसे करता हूँ? Yeah, do you have like a ratio that you follow? What is it? पहले 2 बैंक अकाउंट्स थे. Yeah. Like कहने के लिए तो अभी भी 2 बैंक अकाउंट्स हैं. So what I do is like पहले तो I used made it a point कि इस बैंक अकाउंट में जितना पैसा है, मेरे दिन के नॉर्मल जो खर्चे हैं मैं इससे ही निकालूंगा, एंड जो ये दूसरा इसमें सैलरी आ रही है इसमें टच ही नहीं करूंगा. और इससे इन्वेस्टमेंट्स होंगी, इससे FDs होंगी, और इससे गोल्ड खरीदा जाएगा. अब वो दूसरा बैंक अकाउंट कम, अब मैंने एक्चुअली में क्या, अभी भी सिमिलर ही है. अब मैं क्या करता हूँ कि इस बैंक अकाउंट से मैं पेटीएम पेमेंट बैंक में डाल देता हूँ, क्योंकि हर जगह अब तो UPI यूज हो रहा है ना. तो मेक इट अ पॉइंट कि इतना जो महीने का मेरा खर्चा है, जितना मैं करना चाहता हूँ, उतना एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ मैंने पेमेंट बैंक में डाल दिया. इट्स कॉल्ड पेमेंट बैंक फॉर अ रीजन. तो आई जस्ट यूज इट फॉर माय पेमेंट्स. दैट्स अबाउट इट. Valid. What is the ratio that you follow? Do you follow like a ratio कि नहीं ना इतना ratio करके? Are you rigid about it? नहीं, I'm not rigid about it. I'm rigid about the amount of saving that I have to do in a month. Yeah, you're rigid about the amount you spend in a month. Not spend in a month, amount of saving I have to do in a month. That's the same thing, no? It's not the same thing, because अगर spending उतनी नहीं हुई तो saving बढ़ जाती है. हाँ, अच्छा. You get my point? कई लोग होंगे जो they'll be like कि मैं महीने की एक्सपेंडिचर 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं करूंगा. हाँ. मैं उल्टा हूँ. I'm like मैं महीने का 50,000 रुपए सेव करूंगा हर हालत में. हाँ. Okay. तो अब let's say if my salary is like right now my salary is 1 lakh rupees per month, let's assume that. So I'm like कि मैं महीने का 50,000 रुपए हर हालत में मुझे सेव करना है. हाँ.
तो 50,000 उसी automatically will go into 3 instruments in the form of a RD at the beginning of the month. At the beginning of the month itself, and once in the middle of the month, in the form of an RD/FD in your index fund की SIP and gold Tanish gold harvest की scheme. ठीक है, वो immediately month में चला जाएगा. ठीक है, अब मेरे पास 50,000 रुपए हैं. Now वो 50,000 पूरे के पूरे भी स्पेंड कर सकता हूँ. अगर बच गए तो वो एक्स्ट्रा है मेरा. अच्छा, that is your extra cash. That is your extra cash fund money. और वो फिर वो हाँ कि कभी भी मैंने निफ्टी का कुछ ETF खरीद लिया, खुद को थोड़ा सा कभी खुद को खुश करने के लिए कुछ कर लिया. लाइक सम पीपल भी लाइक हम मैं महीने के 50,000 रुपए से एक बूटी कौड़ी एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं करने वाला. मेरे लिए वो 50 शुरुआत में पहला दिन पहली सैलरी से 50,000 था. Removing it away, so हाँ you can't use it at that. हाँ you can't use it. So whatever is left उसके बाद तो that is just fun money. जो भी फन है मैंने वही है. But most like महीने के इतने मेरे को सेव करने हैं हर हालत में. Clear and simple. How did YouTube start? YouTube started. Because it's become right now in front of us. We had that flag, I think, of silver button. Yeah, silver button from YouTube. Yeah. How did that start, man? Like, so it started in 2018 when I just done my PG entrance. Yeah. So I was like कि चलो मैं at least अभी जो मैंने एग्जाम दिया उसके रिकॉल वीडियोस को थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ. हाँ. ठीक है. I was very active on Quora at that point of time. मेरा मेन फोकस Quora था, मतलब राइटिंग आंसर्स ऑन Quora. But then I was like कि YouTube पे वैसे वीडियोस बना देता हूँ, stuff like that. To like teach, let's get into this teaching thing. उसके बाद मेरे को टाइम नहीं मिला अपनी एमडी में. बिल्कुल भी टाइम था, मेरी फ्रैंकली इंटेंट नहीं थी. जब डीएम ज्वाइन की then I was looking for an escape. Dad had just died and I didn't want to think about it too much. And I didn't want to take the pain by numbing in the form of Netflix. I was like this felt like a good medium and ऋषभ ने भी थोड़ा नच किया. So I started making videos. You were always in that platform, I think, because you were on Quora. I was on Quora. So I always have been on in some social media platform in some way or the other. You've been actively working towards this. Not actively, passively. मेरे को अच्छा लगता है ये करना. But that I generally I do think that one of the reasons for my YouTube success is simply कि वो Quora की Quora audience जो मेरे को follow करती थी वो उसी समय शिफ्ट होके YouTube पे आ गई. और फिर वो YouTube algorithm को burst मिल गया तो और भी exposure ज़्यादा होने लग गया. So that thing is always there. I won't deny that. But having said that, मतलब मेरा गोल सिंपल था. रोज आना है, रोज का मेरे पास 1 घंटा है. रोज की एक वीडियो बना दूंगा on whatever topic I'm going to make. कोई एडिटिंग मेरे को कुछ ज़्यादा करनी नहीं है. मैं सिंपली अपना iPad खोलना है, उससे ज़्यादा मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है. आज इस टॉपिक पे मेरे को दिमाग में ये टॉपिक है, उस पर वीडियो बनानी है. राइट डाउन माई नोट्स, एक्सटेम्पोर बोलता हूँ उस समय, कोई एडिटिंग उसी समय डाल देता हूँ. अच्छा, that's about it. That's a very like easy way to go about it. Puts less stress on you. हाँ, मतलब स्ट्रेस नहीं लेना मेरे को. I want to be consistent. Stress नहीं लेना. Yeah, because over time that consistency will only get you. That consistency will compound. Nobody will give a shit about the fact कि तुमने best production quality video बनाई या नहीं बनाई और things like that. People will just see कि अच्छा रोज बंदा वीडियो बना रहा है, रोज को एक टॉपिक को कवर कर रहा है, कुछ रोज एक sort of tip दे रहा है हमें on how to perform better. क्या कहते हैं, आज एक टॉपिक बीच में थोड़ा बहुत पढ़ाता भी हूँ. It's not like I don't teach. I still teach NCERT. Yeah, I've seen. I still teach NEET UG को NCERT and I still try to teach hematology oncology in some way or the other. जब भी टाइम मिलता है. I think कि पढ़ाने वाली जो चीज़ें होती हैं that वो मेरे लिए थोड़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है एक्चुअली में, because I have to read it also थोड़ा बहुत in order to teach. Okay. और एकदम ही तो जब मैं थोड़ा ज़्यादा फ्री होता हूँ तो पढ़ाने वाला बनाता हूँ. जब आप पढ़ाने के लिए जाते हो यूट्यूब पे या तुम then you actually make an effort कि तुम अच्छे से पढ़ाओ. तो जब भी मैंने कोई नीट यूजी के लिए एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो बना रहा होता हूँ कि मैं उनको ये टॉपिक ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ा दूँ, तो आई एक्चुअली मेक एन एफर्ट कि मैं इसको ढंग से पढ़ूँ, गेट डाउन टू देयर लेवल कि उस समय मेरे को क्या आता है क्या नहीं आता. बिकॉज फॉर मी अगेन बहुत पढ़ाना ज़्यादा आसान है. द टफर जॉब इज टू मेक थिंग्स कंसाइज एंड आई वांट टू डू दैट. सेम अगर मैं कभी नीट पीजी के लिए पढ़ाने वाला हूँ, यू नो पढ़ाने के लिए एक एमबीबीएस लाइक यू नो एन एमबीबीएस ग्रेड और अब तो डीएम इनफैक्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाने में तो अभी शुरू हो जाऊँ, अभी मैं हार्ट के चेंबर्स बताने लग जाऊँ, यू नो 1000 एनाटॉमी के स्ट्रक्चर्स बताने लग जाऊँ. व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दैट? मेरे को तो वही पढ़ाना है ना जो एनसीईआरटी में है, एंड मेक देम अंडरस्टैंड दैट थिंग. दिस इज द रीजन आई हैव बिकम very कि ज़्यादा पढ़ाना तो आसान है, less is more as far as PG is concerned. I think this is something related to production also. We always say recording is easy, editing is the tough part. Exactly. Even when I sit down to edit this part, I will put it off for 1 hour. I'll be like, अच्छा अभी बैठना है, अच्छा edit करना है. Exactly. Someone who's teaching for PG entrance also, it's easier for them to teach a lot. The better teacher is someone who teaches you less but ensures that 70 to 80% questions are solved.
when I cleared this entrance, okay, so I wanted to take up general surgery in Delhi because my hometown is Delhi. And plus I'd seen Delhi infrastructure, so I was like, my medical infrastructure is advanced. So I couldn't get a rank which would cut that. I couldn't study general surgery in Delhi. So I was disheartened, obviously. I was like, I'm the worst ever. I couldn't even do this. I dedicated 1 year of my life to this. I couldn't do it. Okay. A few seniors who knew me and they were like, I'm not fucking, like, stop crying. You've done great. And moreover, move on with your life. Like, this is, you should not be stuck here. Move on with your life. You've done this, you've cleared it, move on. You don't have to study. You can reach the top anywhere, anytime else in your life. मेडिसिन का फायदा भी, लंबी चीज का ये भी फायदा है, it gives you multiple opportunities to reach the top. You don't have to reach the top. लोगों को ना बताऊं क्या लगता है, what people is like, people don't understand the nuance of it actually. Like, लोगों को लगता है अच्छा मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज दे रही है तो इसका मतलब मैं अभी मेहनत करना ही छोड़ दूं, बाद में कर लेंगे. उसका मतलब ये नहीं है. इसका मतलब ये है कि अभी नहीं मिला तो बाद में मिल सकता है. अगर बाद में भी नहीं मिला तब भी, क्योंकि मेडिसिन इतनी बड़ी है, यू कैन पुट ऑन योर एफर्ट्स लेटर इन योर लाइफ, एंड वो नहीं भी मिला तब भी यू कैन डू रियली वेल फॉर योर. दैट कंसिस्टेंसी विल compound and some ultimately. You don't have to work insanely hard. Exactly. Just work hard every day. Yeah. Just that consistency is the every key. day. Just work every day. Exactly. और भी मेरा एग्जाम था DMPs, मतलब हमारे हर 6 महीने DM में भी हर 6 महीने में एग्जाम होते हैं. I got to know about the exam around 1 month ago. तो मैंने रोज का 1-2 घंटा पढ़ना शुरू कर दिया. ठीक है. फाइनली 1 week before the exam, I was like, अब मैं ढंग से बैठ के रोज के जब वापस आऊंगा, रोज के 4 घंटे बैठ के पढ़ाई करूंगा. एग्जाम वेंट रियली वेल बाय द वे. ठीक है. लाइक मोर देन माय एक्सपेक्टेशंस. और इस एक हफ्ते मैंने बाय द वे कोई यूट्यूब वीडियो नहीं बनाई. इट्स द फर्स्ट टाइम फॉर 1 entire week I did not make a single video. ठीक है, वही था, मतलब लाइक यू नो कंसिस्टेंटली मैंने स्लोली शुरू कर दिया. 1 महीने जब एग्जाम पता चला, एग्जाम से पहले बढ़ा दिया, तब shut out everything in life. So I love this statement. In the long run, you are as good as your consistency. In the short run, you are as good as your intensity. But intensity in the long run नहीं sustain नहीं कर पाओगे, burnout हो जाओगे. तो be consistent at the lower level, and जब final push आएगा तब अपनी जान लगा दो. And that's the thing I want to tell. जब मैं कह रहा था ना multiple revision करो, last 10 day revision करो. That's exactly the same thing I want to tell. लॉन्ग रन में कंसिस्टेंसी, रोज पढ़ो, मल्टीपल रिवीजन करो, बट एक फाइनल पुश 10 दिन की रिवीजन की अपनी इंटेंसिटी दिखाओ. What people do is the opposite. People are like, जब शुरू करना है एकदम बहुत पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ते रहेंगे और एंड में दे विल बी लाइक एकदम लूज कर देंगे, फुस हो जाएंगे, बर्नआउट हो जाएंगे. तो वो तो बिल्कुल, वो तो उल्टा हो गया ना. इट हैज टू गो लाइक दिस rather than going like this and this. Because people have to realize, for people who don't have a great memory, like an above average memory, you will forget things. There is no possible way that if you've devoted 2 weeks into learning pathology, you will not remember it. No matter how much 5 days later. You won't remember. You won't remember jack shit 5 days later. I don't know about you. You will probably. No, I still, even I won't remember. But even you won't. Even I won't. That's the thing I realized giving the first time exam ना, कि what the hell, मेरी memory का कोई फायदा नहीं है. I know for a fact मेरी above average memory है, but it doesn't mean jack shit जब 19 सब्जेक्ट हैं. 19 सब्जेक्ट. छोटे सब्जेक्ट्स के लिए मैं हो सकता है मेरी वो मेमोरी मेरे लिए हेल्प कर जाए, बट जब सिलेबस इतना वास्ट हो जाएगा, even my memory will be like, okay, tata, bye bye. I love how, I don't know why people don't think about it like this. Like, तुम्हारा जब तुम फाइनल प्रोफेशनल्स दे रहे थे तब तुम्हारा फट रहा था, उस समय सब्जेक्ट्स इतने कम थे. How can you imagine कि 19 subject you will study with the same intensity or like with the same thoroughness? It's not simply not possible. It's not possible. How can you do it? Exam is equally about strategy as much as your hard work. And I think people, what tend to happen is कि लोग एक ही चीज को ले लेते हैं, या तो सिर्फ मेहनत ही करते रह जाते हैं और do not strategize that efforts, या सिर्फ स्ट्रैटेजी ढूंढते रह जाते हैं, फिर उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई नहीं करते और मेहनत नहीं करते. So when I say कि तुम्हें नोट्स बनाने पड़ेंगे, that is the actual hard work. तुमने स्ट्रैटेजी पूरी पढ़ ली कि आज ये पॉडकास्ट सुन के तुम्हें पता चल गया कि हाँ मेरे को नोट्स बनाने हैं, मेरे को बार बार रिवाइज करना है, और फिर कुछ किया नहीं तो फायदा नहीं, उसका भी कोई फायदा नहीं. और तुम सिर्फ पढ़ते ही रह गए, कभी नोट्स नहीं बनाए, कभी उसको रिवाइज करने की कोशिश ही नहीं की, उसका भी कोई फायदा नहीं. Both the things are equally important in their own way. I feel we're talking way too much about exams and stuff. I know. Let's go to a lighter topic. What else do you do, boss? Like, what do you do else in life? Like, what are your interests? I've always said this, like, you know, मेरा interest has always been like, I've always been this really inquisitive person. So मैं तो books पढ़ता हूँ यार. You read books a lot? I read books a lot, like a lot. Do you have that thing कि नहीं, Kindle नहीं, मुझे actual hard copy books चाहिए? हाँ भाई, बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है. कभी होता है कि मैं e-book डाउनलोड कर लूँगा because I'm not sure कि वो बुक अच्छी होगी या नहीं होगी, and मैं 10 या 15 पन्ने पढ़ूंगा and then I'll order the real book कि अब मैं यहाँ से पढ़ूंगा.
हाँ, valid. है ना? Yeah. Because मेरे को ये रियलाइज होता है कि Kindle पे कोई भी बुक पढ़ना है मैं पूरी कभी कर ही It's नहीं not पाया हूँ. organic. अच्छा, that's great. I didn't know that you read a lot of books. बहुत Kindle. like I have What is something that you wish everybody needs to read? अरे बहुत बार बोला वो Emperor of All Maladies. Yeah. Yeah, I have that copyright here with me. Yeah. Like you know, like loved that book. Absolutely loved that book, Emperor of All Maladies. What did it teach you? It taught me resilience in the face of adversity. Okay. It's a book about the story of cancer and how हमारे cancer therapy evolve की है. Yeah. But मेरे को वो एक for me I took that book as कि how humans have fought against. मेरे को ना cancer बहुत metaphorical लगता है. It's a fight with your own body to a large extent. Yeah. And it's a fight against to a large extent immortality. Yeah. Cancer cells are immortal. Yeah. In a sense, right? Yeah. And वो immortality तुम्हारे अंदर ही जन्मी है. And that's what you want, right? Everyone wants to be immortal. Everyone wants to live for longer. Yeah. And somehow that body has actually achieved that. Yeah. But that is at the expense of killing yourself. And in order to kill that, it's a beautiful way to look at it. I've never thought of it like this before. And in order to kill that immortality, yeah. you have to literally push your body in the form of cancer chemotherapy to the verge of death. You're fighting your own immortality. I'm glad that you spoke about this. I've never thought about this in this way before. Okay. And human struggle against cancer has yeah. been a struggle against in some way their own immortality. Yeah. And it is a struggle which is still continuing. And we are slowly but steadily winning the struggle. Yeah. Technically against our own immortality. And that's the struggle which started in 1940s जब पहले chemo drugs आए. Yeah. And फिर वो धीरे धीरे evolve हुए. And it's mixed with politics. It's mixed with being human in general. Yeah. And वो सारी की सारी stories उसमें है basically. Yeah. I love that book. Absolutely love that book. That's great. What is next in your life? Like, what do you want to do next? DM will end in another what? Yeah, 2 years. 2 years. So सोचा नहीं है. Again, इतना ज़्यादा सोचता नहीं. Most likely, I will get into teaching in some aspects. Yeah. Now, I'm not really sure whether that teaching will be in the form of me being a professor in a college. Yeah. Where I would frankly be, I will try to be one of those professors जो आके class लेता है और अच्छे से पढ़ाता है. Or will it be in the form of me joining, not joining, but teaching on YouTube itself or something like that and being in a private sector. Yeah. But teaching will always be there. Yeah. People do realize that doctor is ultimately, Doctor word का मतलब ही teacher होता है. Yeah. That's something so वो तो मैं रहूँगा. Teaching has always been my passion. So do you want to continue at AIIMS itself? Plus minus, very frankly. Okay. हो गया तो अच्छी बात है. नहीं हुआ तो I won't really regret. Yeah. Okay. Like you said, move on. Yeah, move on with your life. Yeah, no? But Delhi पर. हाँ, कोशिश definitely कोशिश दिल्ली की रहेगी किसी कॉलेज की. इतना तो मतलब कोशिश तो पूरी करूंगा. दिल्ली की तो कोशिश पूरी करूंगा. या और चंडीगढ़. मेरा have a house. Parents have a house in Chandigarh. तो यहाँ फिर वहाँ पे. That's about it. Okay. Last 2 questions. This is how I usually end the podcast. Second last question is, what would be your 2 cents for people about to join pediatrics or people looking to join pediatric oncology? दोनों बहुत different हैं. Let's talk about pediatrics. Pediatrics. Yeah, because I feel that is a more relevant thing because pediatric oncology बहुत ही niche हो जाएगा. Wing it, मतलब just take through it. Actually, I'll say about residency in general. मतलब more than pediatrics also. You people will realize that pediatrics tends to be the toxicer branches. But I'll say that don't be the senior that you despised. Don't become that senior that you despised. I'm pretty sure that toxicity and is still there, prevalent in medical colleges. It's there in and every college. Yeah, so it's there. So you be the change. Yeah. पहले साल झेल लो किसी तरह. But then don't carry it forward. Or even पहले साल जब झेल लो तो फिर don't carry it forward to the intern. तो second year में जब आ जाओगे तब make sure that you do not become the senior that you want. Yeah. Or don't become like जो बोल रहे होते हैं ना, don't become the very thing that you wanted to destroy. Yeah. Okay, so don't do that. At least in my personal individual capacity, I actively try not to be a dick. Yeah. It's an active effort. It's not even a passive effort. It's an active effort. But I can at least be proud of the fact that I'm taking an active effort in that. Yeah, that's a big thing to say. Yeah. ठीक है, I'm taking an active effort. So वो जब सब लोग active effort लेंगे ना, तभी कम होगा ये culture. Yeah. Valid. किसी 1-2 बंदे की वजह से फिर वो 1-2 बंदे वही रह जाएंगे जो अच्छे हैं. वो सबको बनना है तभी culture change होगा. तभी culture change होगा. I remember when I initially started internship, I started with gynae and I love gynae by the way. I love it.
absolutely I love the subject, but then that's mainly because of the first year PGs that I had. And because I remember sitting there at 12 baje and two first year PGs were talking to each other, and they were like talking about how it's toxic for us, but then we have to make sure that we do not pass it on to them. Very very nice, important. And just listening, and I you felt know, like you said रात के 12 बज रहे हैं. हाँ. See, I have always emphasized कि hecticness toxicity नहीं होती. तुम 15 20 24 30 घंटे काम कर लोगे अगर तुम्हारे सीनियर्स अच्छे हैं जो अच्छे से तुम्हारे साथ काम करें और वर्क एनवायरनमेंट कितना अच्छा even if you're dying inside to go home, but you will stay Still there stay just because सीनियर्स अच्छे हैं. Yeah, seniors अच्छे हैं. It was a very brother sister wala moment. Where I was like, Didi, thank you for thinking about all this. And they did. They never passed it on to us, and they treated us well, no matter how many mistakes I made. I remember, so initially IV cannulation is a huge thing. So I screwed up basically. ठीक है. So I took the gel को, and so अंदर का जो वो पीछे का cap रहता है, that wasn't present on that particular one. It was a manufacturing defect. It wasn't there. So I put it in. I didn't know it because obviously I'm new to this, so I didn't notice if the piche wala cap is there or not. And as soon as I took the main stillet out, like blood's coming out, but you don't have anything to stop it. Yeah. And then I was like, what to do? I don't know. ठीक है. And plus मैं टूनिकेट निकालना भूल गया. ठीक है. तो टूनिकेट है. तो मास निकल रहा है. ब्लड भर मास निकल रहा है. ठीक है. So I'm trying to hold it down. ठीक है. उतना नहीं निकल रहा है. ठीक है. But then I tell her कि अच्छा तुम I tell the patient कि तुम अपना हाथ ऐसे करके दबाओ, मैं भाग के लेकर आता हूँ. ठीक है. तो बहुत भर निकल जाएगा. मस्त एकदम मैं भाग के लेके आया, तब तक वो बेड का वो वाला पार्ट भीग गया. ठीक है. मस्त शी shouting on me. ठीक है. Then I make a face and go back. This happened. ठीक है. I tell दीदी कि ये सब हुआ है कि हाँ तेरे पे चिल्लाया, तेरे पे कैसे चिल्ला दिया? दोनों मेरी फर्स्ट ईयर पीजी एकदम उठ के उधर जाके कैसे चिल्ला दिए तुम हम लोग के जूनियर के ऊपर. वो उसको पता है ये सब करना. वो जब नया नया आया तुमको भी सीखना चाहिए ऐसे करके. मास झाड़ दिया के. एंड द बेचारा पेशेंट, एक्चुअली आई फील बैड फॉर द पेशेंट बिकॉज़ शी हैड नो फॉल्ट. ठीक है. बेचारी उधर थी, उसको ऑब्वियसली उसको डर लग गया. ठीक है. खून निकल रहा है. हाँ वो झाड़ दी. ठीक है. But then my but they stood up for you. That's what most important. Yeah, that's the main thing. No. Yeah. And just do things like this, guys. Like, yeah, exactly. Just be nice, yeah. Be kind. The last question, and this is how I usually end the podcast. So, this is how I live my life. Okay, as I've gone through life, and because of the experiences I've had and the difficulties and the good times, I've made a certain set of principles for me. These are my black and white principles. Like, this is what I abide by. Is there anything like this that you go by, or certain morals that you think that people should live by? For me, it has always been like, just be nice. That's about it. Like, किसी को दुख पहुंचा के तुम्हें क्या मिलेगा? Yeah. Okay, that's one thing. Yeah. And how do you go about life in general? I go about life in general. Do you have patience as a person? Do you think patience is a virtue for you? I go life in general. I'm a happy go jolly जैसे लोग बोलते हैं. मैं properly वैसा हूँ. अच्छा. Take one day at a time. Yeah. Like, this is me and my fiance's motto. Yeah. Like, she has actually this is one of my passwords as well. I'll change it today. Okay. Yeah. It's one day at a time. Okay. आज करना है and try to enjoy it as much as possible. Yeah. And not being a dick in the process. That's about it. Okay. Like, pretty much that's about it. That's great. But इसका मतलब ये नहीं है that I don't stand up for myself. If somebody is being a dick to me, then I will be a bigger dick to that person. Yeah. But I don't know if you know about this analogy. This is something that came up from Joe Rogan and Jordan Peterson. There is this very beautiful line we portray in Hindu culture as well, is that the strongest guy is the person who does not have to take out his gun. Right? That is what we hear. That a non-violent guy is the strongest guy. That's not true. So it is loosely derived from the Hindu shlokas, Sanskrit shlokas, as well as the Bible, where the line was the person who does not have to unsheath his sword is the strongest person. Okay? Now that doesn't mean that you don't unsheath your sword. It means that you have to have a sword. Exactly. And you choose not to unsheath it. So you have to be a monster inside. Yeah. But you make that effort to be good. Yeah. Because human beings are capable of being bad. Yeah. Acknowledge that you are capable of doing the worst things. But then make a conscious effort to not do it. And that is what Zen is. Yeah. So that's the thing. Like, मैं actively किसी को परेशान नहीं कर रहा. Yeah. And actively I will try to be kind to people. Yeah. But if somebody is being a dick to me, then then just slightly take the sword out. I'll take the sword out. Definitely. No doubt about that. Yeah. That's been great. That's about it. Like, मतलब और तो just try to enjoy every day. That's it. In some way or the other. Try to experience. Actually, this is one thing I'll say. Yeah. This is one thing I keep on saying myself, that मेरी life बहुत interesting है. I try to keep it that way.
So let's say today I'm having You're doing a podcast after 24-hour duty. After duty, so I'm trying to keep this day interesting. Yeah. Tomorrow I'll do an interview with Dr. Zainab. Yeah. So I'm trying to keep that day interesting. Sooner or later, then I'm planning a trip to somewhere, then I'll try to make that day interesting. Yeah. So I try to keep my life interesting. मैं सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बनना चाहता जिसे वो सिर्फ पेशेंट्स को देखता है. Yeah. I want to have like lots a of life outside. I want to have a lot of experiences. Yeah. On that note, I think we'll end the podcast. I think that was a good note to end it on. Yeah. I think we started a bit very dark stuff, but then I think we've spoken about a lot of things now. I'm glad. Thank you for doing this with me. Yeah. Cool. Let's end this podcast then. Yeah, sure.